expensive products are always better. Is this true? I wouldn't say expensive products are not better or cheap products are always bad. So the worst case of skin damage that you ever treated till now? Long back, I had a girl, she was around 22, and her face was covered with pimples. There was not even one place जहाँ मैं बोलूँ कि पिंपल नहीं है. And I can imagine she had poor thing, she had zero confidence. वो किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा घर पे रहती थी. जब मैंने उसको पूछा कि इतना टाइम क्यों लगाया किसी स्पेशलिस्ट से बात करने में, शी सेड कि मैंने होम रेमेडीज ट्राई की, मैंने इंटरनेट से रेमेडीज ट्राई की, जल्दी आ जाती तो इतने पिंपल्स ना होते. एंड जब मैंने उसको ट्रीट किया उसका बिल्कुल फेस साफ हो गया. एंड देन शी वाज सो हैप्पी. हर मदर केम एंड थैंक्ड मी. आज है हमारे साथ डॉक्टर सुख सागर, द स्किन एक्सपर्ट, जिनके पास सारे पंजाबी सेलेब्स जाते हैं अपनी स्किन ट्रीटमेंट और प्रॉब्ली लेट्स से स्किन को अच्छा करने के लिए. हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. सो डॉक्टर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आजकल इतनी गर्मी हो रही है, पीपल आर फेसिंग सो मेनी इश्यूज. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनको बैक पे एक्ने है, फेस पे एक्ने है, या स्किन पूरी रेड हो जाती है. टू यू नो, इट इज इतनी हार्श समर्स है. सो one practice that you would advise everybody to like follow blindly, कि ये तो करना ही करना है summers में, इसके बिना you know nothing will work. So I completely agree. मतलब temperatures are almost touching 48, 47. Yeah. So this is one season जो skin के लिए बहुत 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 मुश्किल है. So I advise few things. Number one, you have to have plenty of water and fluids. Like I said, coconut water, thandai, जो भी, मतलब plenty of fluids and water you have to have. Secondly, if possible, 2 to 3 times a day you have to wash your face, take shower at least twice a day. Keep yourself as dry as possible. I know it's very very difficult, because अगर हम नहीं करते तो ये rashes, fungal infections, acne, ये सारा इस सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. So we basically have to keep ourselves dry. And then जितना हम अच्छा you know जितना light खाएंगे, like salads and fruits, so that will really help our skin in this weather. So any products that you suggest कि this will actually help the case for everybody, like be it a boy or be it a girl? So mostly मैंने क्या देखा है कि जब इतनी गर्मी होती है लोग कुछ भी अप्लाई करना बंद कर देते हैं, बिकॉज दे थिंक कि स्किन अब ऑयली हो जाएगी या एक्ने प्रोन है तो वी डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग. बहुत हैवी भी लगेगा. या विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ओनली थिंग इज कि इस सीजन में हमें राइट प्रोडक्ट्स चूज करने हैं, लाइक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड वाटर बेस्ड सनस्क्रीन. इवन रात को यू हैव टू यूज वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या सेरम, and that is very very important सोने से पहले. So products should be according to the skin and according to the weather. And it should not be कि आपने apply ही करना छोड़ दिया, which is very very wrong. So ma'am, if somebody doesn't know what is basically water based, so you at your clinic, are you like providing people with certain you know ऐसे कुछ products specifically? Can people come to you wherein you can help them understand their skin better? Because अपनी skin को समझना ही बहुत बड़ी बात है, और products को ऊपर से समझना कि किस you know किस weather में कैसे use करना, it's again a very big thing. Yes, most certainly. हम ये काफ़ी करते हैं, लाइक हमारे पास जो भी आता है पहले हम उसकी स्किन असेस करते हैं कि किस few questions I ask them, then I see their skin, assess their skin कि what kind of skin they have. Even to the extent we have lot of online consultation from all over the world, like America, Canada, Australia, जो हम online I talk to those people and ask them about their skin and try to understand. And then of course I have through years of my experience I have chosen few very very good products, जैसे जो कि ऑयली स्किन के लिए वर्क करते हैं या ड्राई स्किन के लिए वर्क करते हैं, पिगमेंटेशन के लिए वर्क करते हैं. सो आई एडवाइज दोज प्रोडक्ट्स टू एवरीवन हु कम्स एंड विजिट्स और इवन इन ऑनलाइन कंसल्टेशंस. I mean, because it's not easy to find good products over the counter, so sometimes we send them advice. Yes, we send them, we do a courier also. So guys, if you need any good advice about
कि मेरी स्किन पे मैं क्या लगा सकती हूँ समर्स में, विंटर्स में, शी इज योर गो टू पर्सन, शी शुड बी योर गो टू पर्सन. सो ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. बहुत लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता है कि मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई है. तो एज कोई अगर हमें ऑनलाइन मतलब कोई देख रहा है हमें, उसके बहुत ही कोई बेसिक आप समझा सकते हैं तरीका जिससे somebody can actually judge कि is my skin oily and is my skin dry, and again what is the T zone, ये क्या मामला है कि T zone से पता लगता है, ये क्या चक्कर क्या है ये? So basically T zone का मतलब है ये forehead areas nose to this area, that is what the T zone is. You form a T on your face, right? So yes, it is a confusion to lot of people कि हमारी skin oily है या dry है. And also some skins which are oily in summers and dry in winter, so combination skin भी बहुत हैं जो कि majority of the people have that kind of skin. So basically very easy. So when you wake up in the morning, अगर सुबह उठते सार आपके फेस पे ऑयल है, right, at least आपकी टी जोन बहुत ऑयली है. So generally that is a oily skin. And जब आप फेस वॉश करते हो सुबह उठ के एंड आपकी स्किन खिंची खिंची सी है, जब तक आप ऊपर कुछ लगा ना लो तब तक आपकी स्किन खिंची खिंची रहती है. सो दैट इज अ साइन दैट यू हैव अ ड्राई स्किन. सो दिस इज अ लाइक अ सिंपल वे. ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हम लोग उसे डिफरेंट वे से असेस करते हैं, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, लेमैन, दिस इज द इजीएस्ट वे टू टेल इज योर स्किन ऑयली. एंड जनरली ऑयली स्किन में पोर्स ज्यादा दिखते हैं, वो एक्ने प्रोन ज्यादा होती है. ड्राई स्किन इज मोर लाइक प्रोन टू रैशेस, इट इज मोर प्रोन टू एजिंग. सो दोनों ही स्किन्स के अपने अपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है. एंड अगेन स्किन केयर दोनों का बहुत डिफरेंट रहेगा. सो somebody who has an oily T zone or an oily skin altogether cannot use products which are for dry skin because it will just make it worse. Yes. So it's very important to know your skin type and choose your products accordingly. That is where we help. And even treatments for both the skins are different. Like something like hydrofacial की ही बात करें तो we choose different serums for oily skin and dry skin. Because dry skin में हमें उसको oil देना है, so we use specific serums. And जो oily skin है उसमें basically हमें oil clean करना है. So we use different treatments for different skin lines basically. Okay, so let's make it a little interesting. Let's play a short game. So you have to tell me if the statement that I'm saying is a myth or there's actually any truth in it. Right. So drinking tons of water will cure my acne. Okay, so drinking lots of water is one part which will help your acne, but this is sadly only one part. Because acne ये हॉर्मोन्स की वजह से हो सकती है, ये आपकी स्किन टाइप की वजह से हो सकती है, ये आपका अच्छा ना खाने से हो सकती है, या आप अपनी स्किन को बार बार टच करते हो उसकी वजह से हो जाती है, या हेरिडिटरी है. राइट. सो आई मीन बिकॉज द एक्ने होने के कॉजेज इतने ज्यादा हैं, सो अकेला पानी पी के काम नहीं चलेगा. 2 पानी पीना आई वुड से सर्टेनली हेल्प्स टू सर्टेन डिग्री, बट ऑब्वियसली हमें और बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है एक्ने को हेल्प करने में. एंड एट होम यू कैन एटलीस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, eat fresh fruits and salads and vegetables. Avoid spicy food, avoid oily food. And exercise is very important, क्योंकि जब आपके हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो एक्ने अपने आप कम हो जाता है. एंड वन मेजर इशू जिसकी वजह से आजकल एक्ने हो रही है आर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गट इश्यूज. यस. सो अगर मैं पूछूं अपने क्लिनिक में जो मेरे को एक्ने के लिए विजिट करते हैं, उनमें से 60% girls have gut issues. I mean, there is either constipation or there is diarrhea and there are digestive issues. So I always recommend एक तो probiotics उनको, and secondly जब उनकी gut issues ठीक होंगी तो acne अपने आप ठीक हो जाती है. So it's an overall holistic approach we have to take when we are dealing with acne. Okay. And expensive products are always better. Is this true? So
I wouldn't say expensive products are not better or cheap products are always bad. So we have to, like I said, we have to choose what products will fit for a certain budget, right? Like suppose आप एक महीने expensive products खरीद लो और उनको आप बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो कि वो जल्दी खत्म हो जाएंगे. That is not the right approach. That will not help your That case. will not help your case, because you have to use the products regularly, दिन में 2 बार. So you should choose a skincare जो आपके बजट को भी सूट करे, and also कि वो अच्छी हो. Of course, I understand there are products which claim a lot, which are very very cheap. थोड़ा उनसे दूर रहना चाहिए, because I know जो अच्छे products हैं वो कुछ cost तो करते हैं. If we can't buy a good cream for 400-500 rupees. So there's a mid-range products which are like 1500 to 4000, and those kind of products can be also very very good. I mean, doesn't have. I mean, we don't have to always spend 20,000 for a cream to say कि सिर्फ यही अच्छी है. ठीक है. Do you think that one needs to use sunscreen on sunny days only? Is that true? Not at all. So I am sitting here. ये आपकी light that is acting like a sun, right? True. Somebody who's working in an office, the computer screen is working as the sun. Our phone screens have UV rays. The lights which are on the ceiling, they have UV rays. Windows in our rooms, they also have UV rays coming in. So I get so many people who come to me and say कि हम सनस्क्रीन नहीं लगाते क्योंकि हम तो सारा दिन अंदर ही होते हैं. So that is a very very wrong thing. So no matter आप अंदर हो या बाहर हो, आपको every 2 hours नहीं तो चलो 3 hours आपको सनस्क्रीन लगाना है. So I say कि minimum to minimum 3 times a day you have to apply sunscreen. Oh, 3 बार? Yes. Because if you see in our country, pigmentation is a big issue. So it is very very important to avoid that. Because एक बार pigmentation हो जाती है, then it's very difficult to treat it. So it's always better, like precaution is always better than cure. So one must use sunscreen very religiously. And is there any specific way that you suggest to use? Like people you say that there's this 2-finger rule. ऐसा कुछ है कि मतलब इतना तो लगाना ही लगाना है? Yes, because sometimes like I ask people कि मुझे दिखाओ आप sunscreen use कैसे करते हो. So they will put very little on their palm and they think कि हो गया. Right? So एक minimum quantity होती है. That's why उन्होंने 2-finger rule बनाया कि at least it should be like this much, and then you apply it all over your face. And we don't have to merge the sunscreen in. That's what people do. वो sunscreen लगा के उसको अच्छी तरह मसाज करके अंदर merge कर देते हैं. So basically you take the sunscreen, dab it on your face and dab it a little and leave it like that. Okay. So that is the best way to apply sunscreen. And then it will absorb itself. Yes, it will absorb itself, and that's why we have to repeat every at least 3 hours. Okay. Fair enough. Washing my face harshly will remove all the dirt and oil. So why is toner important? अगर हम फेस वॉश से सब कुछ उतार पाते, चाहे वो हार्श यूज करके भी, सो टोनर की जरूरत ना होती. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज जब हम फेस वॉश करते हैं, जितना मर्जी हार्श तरीके से वो यूज कर लें, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो डर्ट होती है, वो उतरती है बट वो अभी भी हमारे फेस पे रह जाती है. सो टेकिंग अ पीस ऑफ कॉटन with the toner, you know, whatever suits your skin, and taking it off, you'll see कि still dirt है. So it's not about applying the face wash harshly. It's about that later on you use a toner and take off that dirt what is still lying on your face. Okay. Popping pimples will make them go away faster. So this topic I had already talked on lengths. No, you should not pop your pimples. Even though पॉपिंग पिंपल से वो जो उसकी पस होती है या इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है. दैट इज ट्रू. बट यूजली लोग क्या करते हैं कि गंदे हाथों से उसको पॉप कर दिया, तो उसका जो अंदर से फ्लूइड निकलता है वो दूसरी जगह लग जाता है. सो वो उससे ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर वो जो पॉपिंग से स्कार छोड़ देता है. सो आई एडवाइज लाइक इवन दो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं
या तो आप उसको किसी स्पेशलिस्ट से पॉप करवा लो, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो. दैट वुड बी द बेस्ट, बिकॉज हम उसका अच्छा करते करते मोस्टली वी एंड अप बुरा कर देते हैं. सो स्कारिंग हो जाती है और एक पिंपल के 4 पिंपल और हो जाते हैं. सो यू शुड नॉट पॉप योर पिंपल्स. And also, आजकल there are a lot of tapes coming. The patch that you put a patch on your pimple and overnight it'll just go away. So yes, those patches help because वो जो वो अंदर से फ्लूइड्स होते हैं उसको सक कर लेते हैं. बट ये नहीं है कि वो ओवरऑल लाइक ओवरनाइट वो उसको पिंपल को कुछ मैजिक हो जाएगा. ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज द जो पिंपल की इन्फ्लेमेशन है उसको डिक्रीज करते हैं. सो या यू शुड अप्लाई पैचेस. बट कई लोग उसको हमेशा ही अप्लाई करते हैं. जब भी हल्का सा निकला पैच लगा लिया. सो यस, सो आई मीन इफ यू हैव अ पिंपल जो मोटा है, नॉडुलर है, उसके ऊपर उसके अंदर फ्लूइड है, तो आप उसको पैच लगा के ओवरनाइट छोड़ के बट सुबह उस पैच को उतार देना चाहिए. ओके, राइट. फिजिकल स्क्रबिंग versus chemical scrubbing versus the treatments that are available at your clinic. Which scrubbing is better? So scrubbing का purpose क्या है? Scrubbing is basically taking off dead skin from your face. That is what scrubbing is. Now each skin को कितनी scrubbing चाहिए, that is different. Mostly scrubbing once a week or twice a week is enough. Now there are two ways. One is physical scrubbing where we छोटे छोटे granules होते हैं and वो we nicely scrub it gently on our face. Make sure वो granules बहुत ज़्यादा hard ना हो and बहुत ज़्यादा बड़े ना हो. They should feel soft on your skin. Number one. Number two, chemical scrubbing means we apply those AHAs, BHAs, glycolic acid and all. So basically ऊपर हमारी dry skin की layer को उतार देते हैं. बट जो होम यूज के होते हैं वो अ सर्टेन स्ट्रेंथ के ही हो सकते हैं. बिकॉज व्हेन वी डू ट्रीटमेंट्स वी यूज दिस केमिकल स्क्रबिंग और इसको पील कहते हैं टू अ हायर परसेंटेज एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू स्किन. सो आई एडवाइज कि घर पे केमिकल स्क्रबिंग थोड़ी सी माइल्ड ही की जाए, नॉट टू मच. फॉर अ प्रॉपर केमिकल स्क्रबिंग person should come to a specialist. A person can come to us. Okay. Scrubbing के लिए आते हैं. Tell us a little bit about it. So basically first we cleanse the face. उसके बाद we use like I told you very mild scrub which has very thin granules and we scrub the face physically. Okay. Then we apply the chemical scrub or a peel looking at a person's skin कि उसको कितनी strength चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी skin कैसी है. And we leave that peel for that also has different timings. कई peels 5 मिनट छोड़ते हैं, कई 10 मिनट, कई 20 minutes. I'm sure. Yeah. Okay. So after that we neutralize the face. जिस peel को उतारते हैं उसको neutralize करते हैं and finally we apply a nice pack according to the skin. So that is the whole procedure of scrubbing. Okay. And ये I mean how should one go about it? कब करवानी चाहिए? So scrubbing basically like I said different skin की different frequency होती है, but generally home scrubbing should be done once a week. Okay. And at clinic scrubbing once a month is good enough. Good enough. ठीक है. So waxing in the long run or laser removal for hair removal in the long run? I am totally against waxing. I mean, sorry to say, but I am totally against waxing. Reason why? मैंने इतनी यंग गर्ल्स फीमेल्स देखी हैं जिनकी वैक्सिंग करके पिगमेंटेड स्किन हुई है, दोज अंडर ग्रोथ हुई है हेयर के, वो छोटी छोटी ब्लैक डॉट्स से हो जाते हैं वो दैट अंडर ग्रोथ, स्ट्रॉबेरी स्किन. यस, स्ट्रॉबेरी स्किन इज अनदर थिंग. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इवन टू द एक्सटेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस विद वैक्सिंग these days. I don't know either the quality of wax has gone down या skins हमारी बहुत sensitive हो गई हैं, but waxing is really damaging skin. Whereas a good laser machine, it has no side effects. It has zero side effects. And number two, at least laser में एक hope तो है कि एक दिन बाद बिल्कुल चले जाएंगे. Whereas waxing you will have to do every month for the rest of your life. And also it is very damaging to your skin. So it's I totally painful also. Yes, it's very painful also. So I always recommend girls and females to avoid waxing and if possible to get lasers done because they are very very safe and in fact they are good for skin. Okay. ठीक है.
एनी एज दैट कुछ ऐसा नहीं है कि लेजर हम लोग बहुत यंग नहीं करा सकते या एक स्पेसिफिक एज के बाद ही करा सकते हैं. Anything that you want to talk about? Generally, I do lasers after 18 years of age. Okay. But in some cases, there are girls like 16, 17. So they have thick growth on their faces. So it's really embarrassing for them to go to school like that. Right? And they have those, even when they take those hair off, those black dots are still there on the skin. And I have seen that kids of their class, they tease them. They call that you have a beard and all that. It's embarrassing for those little girls. So like I said, these lasers have no side effects at all. Okay. So in sometimes those girls, I do laser at a younger age also, because I know it has no side effects. And only thing is कि तब तक थोड़े हार्मोन सेटल नहीं होते, कई बार सिटिंग्स ज्यादा लग जाती हैं. That is the only reason we do it after 18. Not that कोई स्किन पे हार्म होता है या anything like that. Okay. So case to case basis I assess कि अगर उनको जल्दी जरूरत है तो sometimes we do it before 18 also. Okay. So the worst case of skin damage that you ever treated till now, and how the client could have avoided it in the first place. So long back I had a girl, she was around 22, and her face was covered with pimples. She came from Gurdaspur, some place like that. Her face was covered with pimples. There was not even one place जहाँ मैं बोलूँ कि पिंपल नहीं है. एंड मतलब इवन आई कैन इमेजिन शी हैड पुअर थिंग, शी हैड जीरो कॉन्फिडेंस. वो किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा घर पे रहती थी. जब मैंने उसको पूछा कि इतना टाइम क्यों लगाया किसी स्पेशलिस्ट से बात करने में, शी सेड कि मैंने होम रेमेडीज ट्राई की, मैंने इंटरनेट से रेमेडीज ट्राई की. सो शी कुड हैव अवॉइडेड. अगर वो जल्दी आ जाती तो इतने पिंपल्स ना होते. एंड जब मैंने उसको ट्रीट किया, उसका बिल्कुल फेस साफ हो गया. And then she was so happy. Her mother came and thanked me. And I could see कि उसके बाद वो कपड़े अच्छे पहनने लगी. Her confidence increased so much. And then she felt so good. And then she, in fact, few years, like a year or two later, she came to me. She got a good degree. She got a good placement. So sometimes it's all about our confidence. And so you should not ignore these things. And thoda jaldi I would advise ki talk to a specialist before it goes to that level. Okay, so somebody should come talk to any specialist if they're facing any issues. Yes, right. And home remedies or probably something over the internet won't serve the purpose. Yeah, it won't, because we have no clue. Internet आजकल भरा पड़ा है with trillion things. So we don't know what is right and what is wrong. Brings me to my next question. कि skin treatments के लिए why should one go to a doctor? And why not the next door parlor wali didi? Okay, good question, which is every doctor who is working on skin, this field has become open to all. Like if you see internet pe, you will see these posts where skin had lot of pigmentation, and in after suddenly this red face which has in one sitting they claim कि वो pigmentation गायब हो गई. And generally ऐसे posts are there, you will see that that person is not a doctor, right? Okay, so it is very very important, because कैसे चलेगी pigmentation? Either वो कैमरा ट्रिक है या फिर heavy steroids यूज किए हैं. So heavy steroid यूज करके एक बार स्किन साफ हो जाती है, but वो pigmentation उससे डबल होके वापस आती है. So it is very very important to check the degrees, which I always say are very easy. You Google somebody's degrees, you Google somebody's name, उसकी साथ में degree भी आ जाती है. So it's very very easy these days. So I don't understand why लोग इस उसमें फंस जाते हैं. And then they come to us and say कि उन्होंने हमारी skin खराब कर दी. So why on the first place? ठीक है, उन लोगों के पास आप normal facials करवाने जाओ, but not for these medical grade treatments and all that. So anything like pigmentation treatment, acne treatment, botox, fillers, जो भी invasive है, so avoid it, getting it done. Only go to a doctor. Fair enough. If I'm like रात का, if किसी का night time regime है, skin care regime है, which involves
using a good face wash, using a good toner, and using a good moisturizer. Okay, so you think that will serve the purpose? Or you think in the long run, as you age, people tend to put in, like, they have to put in more skincare, include more skincare in their routine? So, using a cleanser, toner, and a normal moisturizer are the basics of skincare, which everybody should use. And of course, it's an excellent practice कि उनको हम अपने routine में add करें, morning and evening. But as we age, we require more products because our skin is now sagging. The skin is showing signs of aging. We have to start using products like retinol. We have to start using products like growth factors, products like anti-aging creams, repair creams, recovery creams. So as we age, for like every skin type के लिए एक product बना है, वैसे ही एक age group के लिए product बना है. So I know it sounds very confusing, but it's like I said, it's always important कि हम शुरू से ही उस चीज को follow करें. Then I get these females जो in their 50s they come to me and they have full on sagging skin. मतलब उनकी ये वाली lines बहुत ज़्यादा prominent हो जाती हैं. Their under eye bags are really big and the skin has really sagged. Not that हम उनको तब भी हेल्प करते हैं और उनको तब भी एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं बिकॉज आजकल लकीली विद टेक्नोलॉजी विद फिलर्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल वी कैन रिवर्स देयर एजिंग ऑल्सो बट इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर हम शुरू से ही ख्याल रखें तो वो एकदम से ऐसे एज नहीं करेगी इट विल हैव दो स्लो एजिंग एंड प्लस यू स्टार्ट दीज ट्रीटमेंट्स फ्रॉम अ यंगर एज लाइक आई ऑलवेज रेकमेंड कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इन 30s so that we can have a good skin till 70s. So it is important and mostly लोगों को ये लगता है कि ये they are harmful for their skin. It has side effects. Whereas there's nothing like that. Years of studies have gone into this. So these things are very, very safe. In fact, they repair the skin. They reverse skin damage and they work as exercise for the skin. So it's very, very important to start at an early age. And another question which I really get asked is कि अगर हम शुरू कर देंगे और उनको एकदम से छोड़ देंगे तो हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी. ऐसा नहीं है, उल्टा ये एजिंग को स्लो करती हैं. एंड क्या हम इस डर से कि अगर एक्सरसाइज करेंगे और एक दिन छोड़ देंगे तो वापस हम उसी शेप में आ जाएंगे तो क्या हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे? सो दिस इज व्हाट आई जनरली टेल द पीपल हु कम टू मी. सो दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ कमिटमेंट दैट वी हैव टू गिव टू आवर स्किन. ये कमिटमेंट है जो हम अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने स्किन के लिए देते हैं. लुकिंग गुड आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ हो गया. सो आई ऑलवेज फील दैट rather than investing on an expensive bag or expensive suit, we should spend on our skincare. Okay, so something like जैसे आपने बोला कि skincare should be in early 30s. So if somebody is looking out for having a very good skin in their 70s or 60s, so they should come to you when they are like in their late 20s or early 30s? Yes, that is the right age. And we do treatments accordingly. ये नहीं है कि अगर कोई 30s में आता है तो हम उसको 70s वाली ट्रीटमेंट कर देंगे. They will do milder treatments जो धीरे धीरे स्किन को बहुत अच्छा एज करती है. And somebody can also come to you for even if you're not, if somebody doesn't want to do any treatments, they can come to you for skincare advice as well. Yes, because there's a lot of with so much information available over the internet nowadays. Right. लोगों को पता ही नहीं लगता कि using the right products and what time to use what, in what sequence they should be used. So everything is important. Like I जितना मुझे थोड़ा पता, I remember reading somewhere that retinol is उसके बाद में whatever you're using, there are a lot of things that you have to take in consideration. कि ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना. But then again, इतनी information है, यही नहीं पता लगता what should one actually go by. Right. That is why it's very, very important to talk to a specialist about it. Okay. So what percentage of retinol, what to use before that, what to use after that, कौन सी skin पे कौन सा retinol जाएगा. It is confusing. And अच्छा ये भी है, इस चीज active ingredients के भी types हैं. Yes.
And हाँ. आजकल you're right, इतनी information and इतने products available on the internet. People see something and a model using it, they'll quickly order that, हाँ. and then it spoils their Spoils skin. it. So वो products भी अच्छे हो सकते हैं, but वो भी किसी की advice से use करने चाहिए. Okay. So the last piece of advice that we want to like give to anybody who's watching this, चाहे वो male हो, चाहे वो female हो, or probably somebody who's very young, a teenager. So I like I said, skincare is a commitment. उसको right age पे शुरू करना चाहिए, right? So that our skin stays healthy and happy for a long period of time. And there is a lot of role of diet and exercise in how you look, on how your skin looks. So it is very important to follow a good diet. It's very important to exercise, and it's very important to start using a good skincare at the right age. So these are the few things I always advise everyone. So like I said, because looking good these days is very important. And I get a lot of people who say that we want to look good without makeup. They want to wake up and look good. And honestly, it's totally achievable. Like I have a lot of people who came to me जो heavy layers of makeup लगाते थे, and आज की date में they come to me with only a layer of moisturizer and a sunscreen. And then they're so happy and confident about it. So it's totally achievable. Okay. So starting at the right age and taking somebody's help in it is very important. Thank you so much, ma'am, for sharing your knowledge with us. Thank you so much. I'm pretty sure it's going to help a lot of people out there. Always there to share my knowledge and help everyone. Thank you so much. Thank you.